अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू बिटकॉइन बैठक। जैसे कि आप जानते हैं, ऑन दिस चैनल वी डीप डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो ट्रेडिंग विद इनसाइट्स यू कैन एक्चुअली यूज। आज का हमारा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि है टॉपिक अबाउट ऑल्टकॉइन सीजन, बिकॉज दिस इज वेयर द फॉर्चून्स आर मेड। यहाँ लोगों का बहुत सारा पैसा बनता है, बट यू हैव टू नो the right time to enter into the market. And most importantly, this could be the biggest trap, right? This is where most of the people this is where most of the people make mistakes, which can cost you big, right? Because they have no idea कि market से निकलना कब है. So are you guys ready to spot the winners, or try we what I'm going to show you is how you can avoid the traps, right? आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने ऑल्ट कॉइन सीजन को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, and why it matters, and the key signs to watch for massive opportunities. So stick around, because understanding the altcoin season could change the way you trade. And as always, don't forget to hit the subscribe button for more daily or weekly tips. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अदर्स से। जैसा कि आप जानते हैं कि अदर्स जो है यो एक्सक्लूड करता है टॉप 10 जो कॉइन है, इंक्लूडिंग BTC एंड इथेरियम को। इसका टोटल मार्केट कैप करंटली है अराउंड 339 बिलियन, इनफैक्ट नॉट रियली थाउजेंड, 339 बिलियन डॉलर पे। और वी आर ऑन अ डेली चार्ट ऑन द अदर साइड। ट्रेंड इज माय फ्रेंड गाइस। जैसे कि आपको पता है कि यू हैव सीन इन माय प्रीवियस वीडियो, मैं स्टार्ट करता हूँ अपने ऑल टाइम हाई से। सो आई नो एग्जैक्टली कि मार्केट में क्या आने वाला है। So the minute I hit all-time high of others का कि market cap का, I can see a peak valley जो कि around Jan 2018 में बनी थी, which was around like $75 billion. फिर second all-time high गया था $338 billion पे in, hang on a second, let me click it out and let me tell you the exact time. So that was back in May 2021. And then again in November 2021, the market hit another all-time high of about $487 billion. Sorry. तो इसने अभी तक इस ऑल टाइम हाई को रीच नहीं किया है. सो द लास्ट टाइम द मार्केट हिट ऑल टाइम हाई, राइट, यहाँ डबल टॉप बना था, विच इज वेयर द मार्केट गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम. सो ये एक की एरिया है जहां से लास्ट टाइम मार्केट ने रिजेक्शन ली थी. लेकिन ये जो ऑल टाइम हाई है, इससे मार्केट ने शाय किया ऑफ अबाउट 72% को. सो रफली 72% मार्केट ने हिट होना है और ये ऑल टाइम हाई फॉर्म हो जाएगा. सो दैट्स समथिंग गुड टू नो, राइट. ये हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट है. दैट्स समथिंग मार्केट इज गोना गो फॉर और एम होगा. Couple of things I wanted to show to you guys, right? So let me reset the chart, right? So you guys can see a couple of things. Pala most important thing I wanted to show you is golden crossover Rochka of EMA 50 and EMA 200. That happened back in November 2024. Another pattern that I wanted to show to you, then I'm going to discuss it later on with you guys. Hang on a sec, let me see. Is this guy. So basically what I did, and something I wanted to show to you, कि मार्केट ने जो है बेसिकली इस पैटर्न में मार्केट ट्रेड हो रही है और मार्केट ने करंटली एक फेक आउट दिया इस रेंज पे. सो दैट वाज द एरिया जहां से मार्केट ने एक फेक आउट दिया, जो कि रीटेस्ट हो रहा है करंटली. एंड इस retesting के बीच में there are a couple of trends that I wanted to show to you guys, which is जो कि फॉर्म हो रहा है. hasn't fully formed yet, but it's gonna form or eventually may end up forming. ये एक bullish pattern है, which is यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हमारे शोल्डर से, लेफ्ट शोल्डर, हमारा हेड. And like I said, trend is always a friend, right? So you have to know your trend before you can do any trade, because you go and take any trade, right? So trade लेने से पहले सबसे पहले you have to know your trend. कि trend में market में क्या चल रहा है. Based on this trend, right, I can clearly see कि जैसे ये trend break होगा,
इसने हिट कर जाना है यहाँ पे जहाँ के another double top form over. So I'm going to get rid of this guy. So another key area to watch out for is this guy, right? So ये वाला जो area है यहाँ पे double top form होगा, and whether it would play out or not, that's something we're going to discuss it later on as well, right? So ये एक another key area है. That's something we're going to watch out for. Couple of other things जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वाला पैटर्न तो फॉर्म हो रहा है, लेकिन इस पैटर्न के साथ साथ लेट मी गेट रिड ऑफ ऑल दीज ड्राइंग्स, राइट? सो इस पैटर्न के साथ साथ अनदर पैटर्न फॉर्म हो रहा है, इनफैक्ट ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है, विच इज अ चैनल पैटर्न जो कि अनदर एक बुलिश पैटर्न है. सो अ पैटर्न विद इन अ पैटर्न, और ये इसका पोल है. सो इन अ सेक लेट मी सिलेक्ट दिस गाय ताकि हम अपने टारगेट मार्क कर सकें, राइट? So ये हमारा अनदर टारगेट है. सो बेस्ड ऑन दिस पैटर्न अगर हम सिंपली इसको कॉपी करें and let me paste it back, तो हमारा टारगेट वुड बी $600 बिलियन पे. सो अगेन सारी चीज़ें कंफर्म कर रही हैं द मार्केट इज गोना गो बुलिश, which is the main point that I wanted to show to you guys, right? So एक पैटर्न हेड एंड शोल्डर ने हमें इनफैक्ट लेट्स गो टू द बिगनिंग. सबसे पहले हमें गोल्डन क्रॉस ओवर ने कंफर्म कर दिया द पैटर्न इज बुलिश. सेकंड कंफर्मेशन हमें यहाँ से मिली हेड एंड शोल्डर से, इनवर्स हेड एंड शोल्डर टू बी एग्जैक्ट, जिसने कंफर्म कर दिया जैसे ये ब्रेकआउट होता है द मार्केट वुड गो बुलिश, जो कि हमें एक और ऑल टाइम हाई दे सकता है. थर्ड पैटर्न हमारा फ्लैग पैटर्न जो कि अनदर बुलिश पैटर्न है, जिसने बता दिया समवेयर अराउंड 600 to 640 बिलियन डॉलर की तरफ मार्केट जाएगी. नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो है बेसिकली मार्केट कहाँ कहाँ से रिजेक्शन लिया और मार्केट कहाँ कहाँ से जा सकती है. सो फॉर दैट हम यूज करेंगे इस जगह से जहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई थी ऑल द वे टू द टॉप, राइट? ये हमारा एरिया है टॉप का. तो मार्केट ने रिजेक्शन कहाँ कहाँ से ली थी, वेयर आर द की एरियाज, राइट? ये हमारे की एरियाज हैं जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ली थी. सो पहला रिजेक्शन यहाँ से आया, दूसरा इनफैक्ट पहला रिजेक्शन यहाँ से आया था, दूसरा रिजेक्शन हमें यहाँ से मिला, तीसरा रिजेक्शन हमें यहाँ से मिला, और अकॉर्डिंग टू Fibonacci retracement चौथा एरिया ये था, एंड द फिफ्थ एरिया इज दिस गाय, राइट? जो कि करंटली EMA 50 की सपोर्ट पे है. सो यहाँ से लेके इसने हमें ये टारगेट्स ऑलरेडी बता दिए. अब द मिनट इनफैक्ट लेट मी गेट रिड ऑफ दिस गाय फॉर अ सेकंड. अब जैसे ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट होता है, और नेक्स्ट टारगेट डिड आई गेट रिड ऑफ, अरे मैं यहाँ की लाइन से मैंने समहाउ डिलीट कर दी थी. सो हमारे नेक्स्ट टारगेट क्या होंगे द मिनट द होल टारगेट्स गेट्स ब्रोकन आउट. जैसे टारगेट हमारा ब्रेकआउट मिलता है, तो फॉर द नेक्स्ट टारगेट व्हाट वी आर गोना डू, वी गोना यूज द फेब एक्सटेंशन, राइट? जो कि हमें बताएगा कि हमारे अगले टारगेट क्या होने चाहिए. सो बेस्ड ऑन दिस हमें हमारे अगले टारगेट मिल चुके हैं. सो लाइक आई सेड, राइट, फर्स्ट टारगेट जो कि हमारे इस रेंज से मिला था बेस्ड ऑन द फ्लैग पोल, राइट? हमारा पहला टारगेट बनता है, सो द मिनट मार्केट ने, क्योंकि ये बुलिश वो है, लेट मी कॉपी इट ओवर, राइट? सो रफली अबाउट 134% का पंप आया था मार्केट में ऑल द वे फ्रॉम द बॉटम, राइट? क्योंकि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है. सो द मिनट वी add this to this guy, right? इसने ऑलरेडी बता दिया, हमें कंफर्म कर दिया कि मार्केट इज गोना गो अप टू दिस लेवल. ठीक है, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, दिस इज अनदर हाईएस्ट पॉइंट. दीज आर ऑल द एरियाज जहाँ से इनफैक्ट लेट मी चेंज द कलर ताकि हमें डिफरेंशिएट पता चल सके कि these could be our potential targets. So I'm going to change these color into green, right? So green, this guy and this guy, and then we're going to look into a couple of different things as well, right? So we got so many confirmation
कि मार्केट ने कहाँ खड़ी हुई है, वेदर इज करंटली बेरिश, करंटली बुलिश। सो हमें मल्टीपल कंफर्मेशन मिल चुकी है ऑलरेडी कि मार्केट जो है वो दिखाई जा रही है, विच इज समथिंग आई हैव स्पोकन टू यू इन माय अदर वीडियो, राइट, जो कि मैंने बीटीसी के साइट पे बताई थी। टोल्ड यू गाइस, राइट, कि मार्केट को करंटली मैनिपुलेट किया जा रहा है एंड मैनी डिफरेंट फेक आउट्स मार्केट में आ रहे हैं ताकि लोग शॉर्ट पोजीशन खोल सकें एंड दे वे जस्ट वांटेड टू लिक्विडेट द पीपल, राइट, क्योंकि मार्केट का काम ही यही है कि लिक्विडिटी स्वीप को हासिल करना। सो बेस्ड ऑन दिस, राइट, यहाँ से हमें पता चल गया फर्स्ट कंफर्मेशन, सेकंड कंफर्मेशन एंड थर्ड कंफर्मेशन के मार्केट इज बुलिश। Now, to have a deeper understanding, हमें जाना होगा back into the history, which is something we always do, right? कि जब भी आपने समझना है market को, you have to go back into the market, right? So what happened is currently, again back in October में, जब यहाँ I think you can hardly see. In fact, let me get rid of this guy and let me fix my chart. Okay, I think this is way better so you guys can see, right? Let me go back to October. So जब मार्केट ने गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ था, which has happened in July, right? मार्केट ने एकदम से कंसोलिडेशन फेज के बाद, this is the consolidation phase, right? As you can see, जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, मार्केट में पंप आया roughly about, if we are to calculate the target, 223% का, right? और मार्केट चली गई एक चैनल में और मार्केट में, let me squeeze this guy a bit so you guys can see, right? So मार्केट ने एक रिजेक्शन एरिया बनाया which is roughly here, और जैसे ही इस एरिया से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, जो कि let me change the color because of the line, EMA 200 की सेम लाइन है, so I'm going to change it to this guy, right, ताकि you can see, right? जैसे ये ट्रेंड लाइन मार्केट ने ब्रेक की, यहाँ से एक ह्यूज पंप, अनदर पंप मिला मार्केट को. सो इनिशियली, राइट, कंसोलिडेशन फेज, एंड दिस फेज इज also a channel. Let me show to you, right? ये already एक channel में market है, right? As you can see कि market इस channel में है, couple of different fake outs जो कि यहाँ पे different points पे मिले, और जैसे ही market ने यहाँ in another, what I wanted to show you, right, कि ये flagpole है जिसका target था ये, तो the minute market broke out this flagpole, which is exactly what's being formed at the moment, right? जो कि currently इस area में form हो रहा है, which is the whole point I wanted to show to you guys. You guys can see, right? कि ये जो area है इस वक्त, वो एक, let me fix the chart as well. So this is the whole point, which is what I wanted to show to you. So the minute it got broken out, right? Market ने pump दिया था from here to here, roughly about 158%. But remember, right, last year's scenario versus this year's scenario is totally different. Last year market के behavior totally different थे compared to market behavior currently in this year, right? So ये 50%, I'm not saying like, as in I'm not denying कि 50% pump नहीं होगा, whatever, but if we were to use, जैसे ही हमें यहाँ से breakout मिलता है, right, we have multiple confirmation कि market में है जो है वो एक crazy किस्म का, did I copy the right guy? I don't think I did, right? So 158% 22, which is what we're going to calculate from here, right? जैसे यहाँ से breakout होता है 158%, if you guys can see, I think it's somewhere here, around here, right? So which is exactly something we had already calculated based on Fibonacci extension. So ये जो हमारा area है is very very critical. इस area में, in fact, this whole area is critical, right? Because market is eventually going to go. So we have so many multiple confirmation के market में जैसे यहाँ से breakout लेना है, which is something would happen around
based on my understanding of the market, January 20th के बाद. So currently market is in dip and people are crying out loud, but what they don't know कि market में होने क्या जाने वाला है. So all the dips that you're seeing and that you had seen in couple of days or you might see in next couple of days as well, right? वो सारा इतना huge recover हो जाएगा कि you might see so many कि आपका एक कॉइन लेट्स से XRP or whatever जो भी ट्रेड हो रहा है $2 or whatever or Sui coin or SEI or any other coin, right? Gala, for example, वो so many fold से multiply होगा that people don't even they can't even imagine because that's something they haven't even seen yet, right? So, which is why, like I said, you have to know a couple of things. So, first thing I think is something we looked at. Did I get rid of the line? Was my higher high key trend, right? Let me see if I got rid of the line yet, right? Which was suggesting, like I said, so based on, I'll leave this guy here for a bit and let me show to you, right, one more time. So I think हमारा starting point ये था कि if I touch all the high points of the market, जो कि market में, and I'm gonna fix the, I think the trend line जो है, इससे नहीं बनी है, let me move into a daily time frame, fix the chart, get rid of this guy. So I think that was getting formed somewhere. Sorry, all time high को अगर मैं form करूँ. So I think if I got it correctly, it was around like 800 something. It's not gonna be a 1.4 trillion trend. It would be like $4 trillion or something. I think it was around here, right? Somewhere around here. So we knew the market is gonna go bullish, which it would eventually. Which is why I always say, like I said, always looking to the touch the higher high, so you know the potential of the market. कि market ने कहाँ से कहाँ तक उसने already अपना high point बना लिया या it could go further higher high, right? So this would be your starting point. Then multiple confirmation we got जो कि हमें बता रही है कि alt coins जो हैं वो उसने हमें crazy returns देना है. And before we move on to further analysis, which is there are two other different charts that I wanted to show to you guys. I thought like this time I'm going to share a tip with you is कि आप सबसे easy तरीके से alt coins को कैसे ढूंढ सकते हैं. So the easiest way, so let me, this is something we're going to look into that Ethereum के क्योंकि it's important to keep an eye out कि Ethereum के returns क्या हैं on a quarter to quarter basis पे based on Bitcoin halving कि Bitcoin की halving for example जब हुई थी market में किस crazy तरीके से market ने perform किया था back in 2020 one so 2016 में BTC की halving हुई 2017 next year following year crazy pump आया था 2020 में halving हुई so first quarter में you saw crazy pump 2024 में halving हुई so you know right so based on historics 100 plus returns हमारे पास 2025 Q1 में आने हैं. So which is something you guys should always keep an eye out, right? Because these are important areas, so you should know, okay, market में हो क्या रहा है, किस तरीके से market is going to perform. That's something you guys should always know. So yeah, like I said in this video, I thought like I'll share the easiest way कि market में आप किस तरीके से hunt कर सकते हैं coin के altcoin, because this is where the fortune is, right? जहाँ आपके सबसे ज़्यादा पैसे बन सकते हैं. For example, if you were to buy BTC at $70,000, आप उसका you're not gonna sell it at $80,000 or $90,000 because you're not gonna make big chunk of money, right? So you would rather wait for BTC to hit 140, 150 or something ताकि आपके 100% हो सके. Versus an altcoin, ये बहुत आसानी से in a couple of days, this is something you can easily achieve, right? So we are on coin market cap. The easiest way to hunt altcoin is stick to top hundreds और उसमें only in good projects. I'm not gonna suggest. I'm not one of those guys, right? जो कि मैं suggest करता हूँ to invest into meme coins. No, not at all. Always invest into good projects. Meme coins could be risky, except with the exception of Doge, जो कि you know right, why has been pumping since the beginning. जब से इसकी evolution हुई थी तब से pump कर रहा है. And Shiba Inu. These are the two exceptions
जो कि मीम कॉइन में है. The way I see it, everybody sees it different. Some people invest in Pepe and all those various different Floki and whatever different meme coins may. But this is something I don't suggest, right? It could be risky. Short-term investment, let's say 0.7 pay, zero point 0.8, 0.75 pay. Yeah, you want to invest. Yeah, kind of makes sense based on the trend, right? Based on हम किस साइकिल में इन्वेस्टमेंट के और कॉइन के किस साइकिल में है ताकि यू नो राइट कि मनी कहाँ फ्लो हो रही है एंड इफ यू वांटेड टू फॉलो द मनी या इट कैन मेक सेंस टू इन्वेस्ट इन दैट टर्म लेकिन लॉन्ग टर्म पे दिस समथिंग आई डोंट सजेस्ट सो गोइंग बैक टू द बेसिक स्टिक टू टॉप 100 क्लिक हियर सबसे पहले ये जो पंप हो चुके हैं don't worry about these guys this is something you shouldn't even be looking at यहाँ only thing is you guys should be looking at कि यहाँ short की opportunities बन रही है नहीं बन रही and this is it कि ये already pump हो चुके हैं and this is where most of the people go wrong right कि the minute they see this okay ये pump हो रहा है मजीद pump होगा they invest put the money in और उन्होंने wrong time पे entry ले लेती है so you know right it's important to know कहाँ entry लेनी है कहाँ नहीं लेनी है so don't worry about it never invest into कि ये जो चलती ट्रेन में है उसमें कभी भी आप पैसा इन्वेस्ट नहीं करते सो क्लिक अगेन ये आपको डाउन साइड पे दिखाएंगे कि भाई यहाँ आपकी पोटेंशियल एंट्रीज हो सकती हैं बट अगेन बेस्ड ऑन दिस 20% आई एम नेवर गोना इन्वेस्ट जब तक मैं जहाँ कि इसका ट्रेंड एनालिसिस और सारी चीज़ें टेक्निकल सारी चीज़ें नहीं देख लूँ market में इसकी न्यूज़ I'm not gonna invest a single penny into these coin but this just I just wanted to show to you right this is the easiest way to like for example this Hina it's a very good project something I'm gonna look into that कि okay if I were you कि हाँ इसके मैं जाके एनालिसिस करूँगा कि भाई इसके एनालिसिस क्या है किस तरीके से फॉर्म हुए लास्ट 7 days has been performed I think it was down about 10% or something जो कि डाउन हुआ तो I'm gonna look into that okay भाई क्या हुआ है किस तरीके से हुआ इसका ऑल टाइम हाई क्या था and all those blah 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 I already know about this point so I'm not gonna do the analysis for you guys but this is something this is the easiest way you can hunt के आपके लिए trades के लिए कि how you guys can easily make the money of good solid projects right on a short term basis so like I said market is gonna pump in next couple of days in fact already we are closer to January 1st so market ने already in next couple of days like 15-20 days market is gonna go crazy which is most of the people अभी जो रो रहे हैं they would regret कि इस time पे उन्होंने entries क्यों नहीं लेनी है so always remember to know and like I said abhi market ने slightly for the next day or two because of the holiday season and whatever volume कम होना है market might go down a bit लेकिन उसके बाद the minute it go up जैसे ही bullish होगी it would go crazy अब हम देखते हैं importantly another important thing I wanted to show to you guys is BTC because BTC is very important right to keep an eye out on BTC BTC is what weekly candle का आज close हो रहा है and this is where we are at कि इसके close होने में roughly about 2 hours 17 minutes हैं but what I wanted to show to you guys is this pattern right always keep an eye out on BTC regardless किसी भी coin में ट्रेड कर रहे हैं so you know exactly what you're dealing with BTC को क्योंकि सारे coins जो हैं वो BTC को मिरर करते हैं और BTC की dominance पे always keep an eye out for example I think it has dropped down a bit it went up then it went down right so I think in last couple of days it went as high as 60% और नीचे जा रही है फिर again based on today's candle is it went up a bit right so going back to the BTC chart जो कि the point I wanted to make it to you guys right is ये वाला pattern and this breakout कि market ने इसको breakout दिया retest किया and then it went back up now take a look at Ethereum what exactly is happening market में नीचे से break वो दिया fake out दिया people got panicked कि भाई यहाँ से उन्होंने they sold क्योंकि liquidate होता right there's tons of liquidity up for grab on Ethereum as well एक वीक लगी people got liquidated कि और further market नीचे जाएगी but you right market is not going to go down golden cross already हो चुका है on a daily time frame की basis पे right market ने आया इस पैटर्न को again retest किया upside यहाँ से भी एक fake out दिया
right? I showed you exactly what happened. ऊपर गया, एक retest हुआ, then it went back up again, right? So if you see the similarity, कि आपको पता हो कि मार्केट में होने क्या वाला है, and how the whole thing is playing out, right? Market is going to go crazy, or the way I see it, Ethereum would definitely go to somewhere between, based on my analysis, again ये मेरे analysis है, my understanding of the market, Ethereum was easily hit on a short term basis पे 7,000, on a long term basis पे Ethereum would be roughly 10 to 12,000 डॉलर पे हम देखेंगे. So guys, it's very very important for you to remember कि मार्केट किस तरीके से प्ले आउट हो रही है, and always keep an eye out on BTC ताकि moves हो. Always keep an eye out कि भाई मार्केट में हो क्या रहा है. So I showed you various different confirmation कि भाई मार्केट bullish है. लोगों को जिनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, दे आर पैनिक सेलिंग, एंड इफ आई वर देम, मैं रादर बाय करूंगा रादर देन सेलिंग एट दिस स्टेज. मैं होल्ड करूंगा, और आई एम गोना सेल आफ्टर. इनफैक्ट मैं अपनी 20% ऑफ द सेल करूंगा आफ्टर 20th, और उसके बाद 80% ऑफ द बैग आई एम गोना कीप इट अप अंटिल मार्च और एंड ऑफ अप्रैल, जहां मैं जाके सेल करूंगा विद द हाईएस्ट रिटर्न, एंड पीपल विल गो bonkers at that time कि उन्होंने इस वक्त $5,000 invest किए होते. That would have been somewhere close to $45,000, which most of the people they have no idea. And most importantly, like I said, is always remember to go where to go and hunt for. There are various different ways to hunt for altcoins. So I thought like I'll show you the easiest way, which is this way. Go into last 7 days, what exactly happened, जो जो ये coins down है, उनको take a look at it, do the analysis, do the technical analysis. If you want me to do the technical analysis for you, leave the comments below, and that's something I'm going to do it for you. So thank you so much, guys. I hope to see you in the next video, and if you haven't subscribed yet, don't forget to hit the subscribe button. Thank you. Bye.